Sheesh, Paridhi Bambani, Kashish Kapdi, please switch on your cameras. Just 13 students. Paridhi, you can unmute yourself, Paridhi. Yes. I think you can unmute yourself. Achha, yeah, you people can unmute yourself and talk to me. Yeah, Paridhi, you are maintaining that Excel sheet, right? Yes, ma'am. Today, send me those students' name who are absent. Today, yes. Okay? You just type and give it to me so that I can forward it in the group. Okay. So today, not the present people, only the absent ones. Only the absent students who all are absent, you send me their name. Okay. Because we have only 12 students out of 30. Fine. Guru, unmute yourself. Yes, ma'am. Sheesh, Devansh, Naman Kakaria, Ritika, Tisha Gombar, Priyal Bhatt, Mohit. Please switch on your camera. Otherwise, you can leave my class. You people can leave my class if you cannot switch on your camera. If you have any problem with your camera. Thank you, Mohit. Thank you, Ritika, Priyal. Sheesh, where are you? Tisha Gombar, Devansh Garg. Naman Kakaria. It's of no use teaching you people if you cannot switch on your camera. I cannot see you people. Yes, ma'am. Sheesh, I cannot hear you. Yes, ma'am. Switch on your camera. Naman Kakaria and Devansh Garg. Yes, ma'am. Just a second. I'm still waiting. I can wait for another 5 minutes. Switch on. Gunu, review yesterday's content. Yes, ma'am. Yesterday we discussed about simple frequency and cumulative frequency. In which simple frequency we discussed that the lower limit and the upper limit is same. And in cumulative frequency, we discussed about low cumulative frequency and high cumulative frequency. In which in less than CF, we discussed that the class intervals are given like less than 100, less than 200. So we will write in 0 to 100, 100 to 200 in that way. And in the frequency, we will, if the first frequency is given 3 and the second one is given 11, so the first one will be 3 and the second one we would subtract 11 minus 3 and the continue method will be followed. And in more than CF, we discussed that the class intervals are given like more than 100, more than 200. So it will be written as 0 to 100 and 100 to 200. And in the frequency, if it is given 3, 11 in that way, then the first one will be minus by 11 minus 3, and in the same method it will be continued. Okay, fine, very good, very good. Gurnur, I'm really happy that at least you have jot down all the points what I taught you people yesterday, right? And the same thing, I want now again. I am calling back Devansh Garg, Naman Kakaria, and Tisha Gombar.
Tisha. Okay, Gurnur is there. Devansh Garg is out. Okay, he's there in the class. Fine. 13 students. Now, when I am talking about this more than and less than, this we have already done under the cumulative frequency series. Now, only one very important point that is left, that is called when middle value is given. Okay, when mid values are given and you are supposed to convert into the exclusive series, hai na? Which series actually we need for the interpretation? Real Bhatt, which series do we need for the interpretation or for any analysis? Which type of series do we need? It should be inclusive series or exclusive series. I was absent in last class. I am not able to hear you, Priyal. I was absent in last class. No, this I taught, I think, a couple of days back. Ma'am, I wasn't able to attend a few classes before because I was not well. Devansh Garg, which series do we need for the interpretation or analysis of the data? What type of series do we need? What type of series do we need? Devansh Garg, are you there? Yes, ma'am. Yeah, please. Bhavya Patel, switch on your camera. Naman कहाँ करिया? Naman, switch on your camera, Naman. हाँ, तुम क्यों ऑफ कर रहे हो कैमरा बार बार? फिर मैं तुमको क्लास के बाहर कर दूंगी, फिर मत आना वापस मेरी क्लास में. Which type of series do you need for the interpretation or analysis? Unmute yourself, Naman. Unmute yourself, Naman. No, you are not audible, Naman. You are still not audible. Is he audible to you all? No, No, ma'am. ma'am. No. Okay, Sheesh, you please let me know. Yeah, you are audible now. Yes, you can give me the answer. Bolo beta, which series? Which series we can use? We have to use for the analysis and interpretation. Which series? Okay, great. It's gone. Shirsh. Shirsh, please let me know the series. I think it's inclusive. Very good. वॉइस क्रैक हो रहा है. Which series? वॉइस क्रैक हो रहा है. Which series, Mohit? वॉइस क्रैक. Yes, ma'am. Very good. Ritika, which series? Ma'am, it's exclusive. Why we are converting all these series? Exactly, it is exclusive series. Why are we converting these series? क्या जरूरत है कन्वर्ट करने के लिए? जैसा है वैसे के वैसे यूज कर लो डेटा को. Why are you converting into exclusive series? And what do you mean by exclusive series? Shirsh? What do you mean by exclusive? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. Ma'am, your voice is not clearly audible. What do you mean by exclusive? What do you mean by exclusive series? मैम, हम यहाँ पे एक ही जगह पढ़ा सकते हैं. आप वहाँ पे बैठ जाओ ना, नहीं तो ऊपर कहाँ जाना है आपको, या तो इसमें जाना है?
अभी तो नहीं बैठे ना। मैं रेगुलरली यहीं पढ़ा रही हूँ। या आप पीछे बैठ जाओ, ऐसा करो। What do you mean by exclusive series, Shirsh? Ritika, what is exclusive series? Exclusive series is a series where the upper limit of the first class interval is the same as the lower limit of the second class interval. Exactly. The upper limit of the one class interval is exactly equal to the lower limit of the next class interval. That is what is the exclusive series. And for all the interpretation or analysis for mathematical information or for the data interpretation, you need exclusive series, none other than that. Any of the series, anyway, whether it is an open-end series or it is an inclusive series or it is a cumulative frequency or only middle values given, you have to convert all these into an exclusive series first, and then only the analysis can be done. Clear? Now only one point in this organization of data is left, that is called when mid values are given and you have to convert this mid value into the exclusive series. And we'll see how we can convert. How can we convert into the Microsoft PowerPoint presentation? Is it visible now? Is this visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now see here, only mid values are given, है ना? देखो, जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या फिर हम जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस सीरीज जिसे कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज, दिस इज कंटिन्यूअस सीरीज, this exclusive series is a continuous series, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 10, 15 to 20. This is a continuous series, okay? And इस continuous series में जब हम analysis करने जाते हैं तो इस तरह से हम इसका mid value निकालते हैं. I hope you all know, because in mean median mode this is very important to convert, है ना? हम पूरे class interval को भी convert into the mid value. अब suppose mid value दिया है and frequency दिया है, you have to convert this mid value into the एक्सक्लूसिव सीरीज. ये कौन सा सीरीज है? ये कौन सा सीरीज है? क्या कौन सी सीरीज है ये? एक्सक्लूसिव सीरीज. अब हमें ये दिया है 2.5, 7.5, 12.5, 17.5. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में. तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सी, आई एम शोइंग इट टू यू हाउ यू विल कन्वर्ट इट. कम हियर. 7.5 minus 2.5. सबसे पहले क्या है आपका? फर्स्ट वैल्यू इज 2.5 and सेकंड वैल्यू इज 7.5. तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? 7.5 में से 2.5 को माइनस करेंगे. तो डिफरेंस कितना आया? What is the difference? 5 is the difference. 5. That is the difference between first mid value and the second mid value. समझ आया? The difference between फर्स्ट मिड वैल्यू एंड दी सेकेंड मिड वैल्यू. तो जो भी डिफरेंस है आपका फर्स्ट मिड वैल्यू, वो हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकेंड मिड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे. दूसरा क्या करेंगे? वो जो डिफरेंस आया है, यानी कि the 5 is the difference, that 5 will be divided by 2. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ. This 5 is divided by 2. तो क्या डिफरेंस निकला आपका? 2.5. क्या निकला? क्या निकला? 2.5. Half of the mid value is subtracted from the first mid value. Half of the mid value, यानी कि इसका जो 5 का हाफ कितना हुआ? 2.5. तो आप फर्स्ट मिड वैल्यू में से उसे माइनस करो, यानी कि 2.5 माइनस 2.5, यानी कि ये क्या है? 2.5. ये हाफ है. अब इस हाफ को हम इसमें माइनस करेंगे, 2.5 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? लोअर लिमिट आ गया हमारा 0. और इसी हाफ को हम ऐड करेंगे अपर लिमिट के लिए.
half of the difference is add to the first mid value to get upper limit. यानी कि 2.5 plus 2.5 equal to 5. यानी कि आपका पहला जो क्लास इंटरवल आया क्या आया 0 to 5. पहला क्लास इंटरवल क्या आया तुम्हारा 0 to 5. अब दूसरा करके बताओ चलो मुझे फटाफट. अब आपको बता सेकंड निकालना है 7.5 एंड 12.5. मैंने पहला क्लास इंटरवल निकाले 0.5. अब आप सेकंड क्लास इंटरवल निकालो 7.5 एंड 12.5. ये फॉर्मूला है. फटाफट करो और मुझे बताओ कैसे करोगे. अब बोलते जो मैं लिखते जा रही हूँ, मैं इसको चेंज कर रही हूँ. कम ऑन. क्या करेंगे इसमें पहले हम थर्ड मिडिल वैल्यू की थर्ड वैल्यू क्या है. थर्ड मिड वैल्यू 12.5 minus 7.5. What will be the answer? 5. 5 again. Again, this will be divided by 2. क्या आ गया आपका 2.5. And this 2.5 will be added to 7. पहले क्या होगा subtract होगा 7.5. तो कितना आ गया आंसर 5. 5. यानी कि आपका ये लोअर लिमिट हो गया सेकेंड लाइन का. एंड अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे 7.5 में ऐड कर देंगे. कितना आ जाएगा 10. कितना आ गया 10. 10. तो आपका सेकेंड देखो क्या आया तुम्हारा लोअर लिमिट इज 5 एंड द अपर लिमिट इज 10. नाउ कैन यू डू इट योरसेल्फ नाउ. फटाफट करो दूसरा पॉइंट. फटाफट करो दूसरा. मैं नहीं बता रही हूँ और मुझे बताओ करके बताओ. एंड यू हैव टू शो इट टू मी. प्रेजेंट करोगे तुम मुझको. प्रेजेंट करोगे तुम मुझे. यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट टू मी. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ. कन्वर्ट करो. कन्वर्ट द मिडिल वैल्यू. मिड वैल्यू को कन्वर्ट करो फटाफट. And mid value is given. Okay, 15. Convert this whole 15, 25. That is the mid values 15, 25, 35, 45, 55, 65. 1, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. उसकी frequency लिख लो. 20, 19, 19, 17, 17, 62, 62, 41, 41, 73, 73. See, when you are converting mid values into a frequency distribution, there will be no change in the F. There will be no change in the frequency. Frequency में कोई change नहीं होगा. आपका frequency will remain as it is. Okay? आपका जो frequency होगा, that will remain as it is. Convert करो फटाफट उसको convert करो. Shall I repeat again, Gurnur? Yes, Do I need to repeat the whole sum again? Okay, fine. Okay, fine. Okay. I'm just repeating the sum. Mid values are 15, 25, 35, 45, 55, 65. Frequency is 20, 19, 17, 62, 41, 73. Now convert into a continuous series or frequency distribution. इसके बाद हमारा ओपन एंड है. बस तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया. But now we have to complete 2 chapters for your UT1. That is Yes, ma'am. mode and
theory of demand. I just wanted to know what you want to start with first, mean median mode, or you want to start with the theory of demand. I think mean median mode हम पहले कर लेते हैं, है ना? Ma'am, your voice is breaking. है ना? फिर आपका mean median mode है. हाँ यार, कुछ नहीं कर सकते. Voice is breaking. What? Could you repeat the last bit, please? Last, I will be continuing in median mode from tomorrow onwards. I am not going to. Yep. Ma'am, can you repeat the last frequency? Last frequency. Gurnur, have you written Gurnur? Yes, ma'am. Gurnur, have you written? The last three frequencies are 62, 41, 73. 62, 41, 73. I'm done. Yes, ma'am. Okay. Any more point, Kashish? Unmute करके बात करो बेटा. Muted हो. Yes. Okay. What, ma'am? Nothing. मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको तुम लोगों को इस पे कन्वर्ट करना है, ठीक है? Done? Good have done? No, ma'am. What about others in the class? बेटा अगर आपको दो, आप if you'll be able to take out two, then you get an idea कि कितने के class interval है और हमें कैसे करना है. Open end में तो कुछ है नहीं तो बताने के लिए. Open end में example नहीं दिया. Angeline, Tisha, Bhavya, complete किया? Natik, done? Natik, am I audible, Natik? Yes, ma'am. आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके ही रखो. इट्स ओके, फाइन. मोहित चौधरी. हाँ मैम. Okay, will you please let me know the answer? मैम 25 में से 15 माइनस करें तो 10 आएगा, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 को 15 में से माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी 10 और 5 को 15 में प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आएगी 20. ऐसे ही करेंगे तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, then so. Okay. Okay, Priyal Bhatt, have you done this? Priyal Bhatt, unmute yourself first. Yeah, please let me know the answer. How did you perform it? How did you calculate it? Please let me know. She has left the class. Has she left the class? Yeah. Yes, ma'am. Great. ऐसे बच्चे होने चाहिए हमारी क्लास में. God,
I'm sick with these kids. Paridhi. Sorry, Paridhi, Natik. Repeat the answer. And please let me know how did you calculated it. Natik. बेटा मैं ना तुम्हारे सिलेबस में से चैप्टर कम कर दूंगी, मुझे चलेगा, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो तुम्हें आना चाहिए. दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी. कैसे कैलकुलेट किया मुझे बताओ, और क्या आंसर आया वो बताओ. Nothing. Nothing. Am I audible to you? Yes, ma'am. Nothing. Yes, sir. जवाब दो बेटा. हाँ बोलो, आंसर दो. सर मुझसे ये वाला नहीं हुआ. नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ बेटा, मैं किस लिए बैठी हूँ यहाँ पे, तब से तुमको पूछ तो रही हूँ मैं. चलो सम क्या है, स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट. आई एम एक्सप्लेनिंग इट. सन क्या है आपका, मिड वैल्यू दिया है. मिड वैल्यू क्या है नातिक, कौन कौन से मिड वैल्यूज है, प्लीज रीड द मिड वैल्यूज. 15, 25, 35, 45, 55, 65. 65. सबसे पहला स्टेप है, यू हैव टू डिडक्ट first second mid value, sorry, you have to deduct first mid value from the second mid value. You have to deduct first mid value from the second mid values. करो, deduct करो. That is 25 minus 15. कितना आंसर आया? 10. 10. Okay. Now this 10 has to be divided by 2. This 10 has to be divided by 2. कितना है आंसर? 5. 5. Now थर्ड पॉइंट, जो पहला मिड वैल्यू है, कितना है पहला मिड वैल्यू? 15 है ना. हाँ 15. पहला मिड वैल्यू कितना है? 15. Now सबसे पहले लोअर लिमिट के लिए, फॉर लोअर लिमिट पहले मिड वैल्यू में से -5 करो. कितना आया? 10. 10. So 10 is your lower limit. पहला लोअर लिमिट कितना है? 10. अब अपर लिमिट के लिए यू हैव टू एड द सेम वैल्यू इनटू द फर्स्ट मिड वैल्यू. यानी कि फर्स्ट मिड वैल्यू कितना है आपका? 15, और उसमें क्या ऐड होगा? 5. उसमें 5 ऐड होगा. कितना हो गया? 20. 20. So your first limit is 10 to 20. So your first limit is 10 to 10 20. to 20. अब उसी तरह से दूसरे लिमिट को फाइंड आउट करो. यानी कि आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे. समझ में आया? सेकंड क्लास इंटरवल के लिए आप थर्ड में से सेकंड मिड वैल्यू को माइनस करेंगे. आर यू गेटिंग नैतिक? Yes, ma'am. Yeah, solve now. मिड वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करना एक्सक्लूसिव सीरीज? Done. So your class interval Second is वाला 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. है ना? लास्ट क्या आ रहा है आपका? 60 to 70. Am I right, परिधि बंबानी? Ma'am. Kashish Kapdi? Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now I'm giving you some more examples which you have to do at home. देखो चलो. Convert the series into exclusive series. लिख लो, sums लिख लो. Convert the series into exclusive series. X 100 to 109, 100 to 109, 110 to 119,
110 to 119, 120 to 129, 130 to 139, 140 to 149. उसका frequency लिख लो. Next is frequency 26, 24, 37, 19, 19, and just 9. 19 and just 9. ये पहला series है. दूसरा लिखो. Convert the following cumulative frequency into exclusive series. Converting cumulative frequency into exclusive series. Converting cumulative frequency into exclusive series. More than 0, wages. This is wages. More than 0, more than 1,000, more than 2,000, more than 3,000, more than 4,000, more than 5,000. More than 0, more than 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000. Number of workers. उसी में worker frequency है number of workers. 100, 8,080, 6,868, 4,343, 3,838, 2,020. Next question. Cumulative frequency into exclusive series. Cumulative frequency in exclusive series. Less than 20, less than 40, less than 60, less than 80, less than 100. Number of students, that is your frequency, F. 1,414, 3,030, 5,050, 5,858, 7,878. Now come to the again converting into exclusive keys. Then mid value is given. Then mid value is given. Converting into exclusive keys. चलो लिखो 5. Midpoints है. Mid value is 5, 10, 15, 20, 25. नहीं होता यार, आदत हो गई है. 30. Frequency 40, 60, 20, 10, 30, 40. Okay, so this will be your homework. Thank you. And now I'm going to start with mean, median, mode from tomorrow onwards. Be ready for that. And before I start, I am going to review all this point what I have taught you people yesterday. Take care. God bless you all. Paridhi Bambani. Paridhi Bambani. Yes, ma'am. I will send the absence. Paridhi. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, Paridhi. Send me the list of absentees today. And keep Srivalli absent only. She joined class very late, as well as that Priyal Bhatt. Make her also absent. Priyal Bhatt. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you.